Hello student, welcome to this new session on discrete mathematics. This is our sixth lecture. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 6 number lecture. First lecture ରେ ଆମେ syllabus discussion କରିଥିଲେ. Next second lecture to 5 lecture ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ set theory ବିଷୟରେ discussion କରୁଛନ୍ତି. Last lecture ରେ ଆମେ Cartesian product ବିଷୟରେ discussion କରିଥିଲେ. ତ ଆଜି ଆମେ lecture ରେ କିଛି discussion କରିବା set operation ବିଷୟରେ. ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟ୍ ଅପରେସନ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜଣାଥିବ, ଯେମିତିକା ତମର ଆସିଲା ୟୁନିୟନ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ଡିଫରେନ୍ସ, ସିମେଟ୍ରିକ ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଅପରେସନ କ'ଣ ଅଛି, ୟୁନିୟନ ଅଫ ସେଟ୍ସ। ତ what is basically union of sets? The union of two sets A and B denoted by the symbol A union B. This is the symbol for union. Okay, is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. माने कौन कहूची, जदि हमें A union B find out करिबा, देखो this is the Venn diagram of A union B. तो what is the basic meaning? एठी जो कहूची, जदि मु गोटे नउची A set is equal to let's say A set रे एलिमेंट होची 1 2 3, ठीक अछि। B set रे मु एलिमेंट let's say नउची 2 3 4, ठीक अछि। से कोन कहूची, देखो A union B is represented by this symbol union A union B like this. Okay, define को बोले करा होची, this is equal to, देखि कोन लिखा हला, set of all those elements which are either in A रे जहा अछि एलिमेंट त ताकू फर्स्ट कलेक्ट करनियो, और इन B रे जहा अछि ताकू लिखिनियो 2 3 4, ठीक अछि। और इन both रे किए कोन अछि 2 3 2 3, तो ऑलरेडी 2 3 ठी आसी जाइछि, किंतु एज ए सेट आमे कोन जानछे, सेट रे रिपीटेशन रहिबोनी, ताले एठी 2 3 दी थर आस्तला, सेठी कोन आसो सिंगल थर आसो, ताले 1 2 3। एबे देखो A रो एलिमेंट 1 2 3 अछि, B रो एलिमेंट अच्छा एठी 4 आसीबो, 2 3 4 अछि, बोथ रो एलिमेंट 2 3 अछि, ताले से बेसिकली कोन कहउछि ना A union B is the collection of all those x which such that x belongs to A or x belongs to B. देखो एठी आसीबो और सिंबल आसीबो, ठीक अछि। आइदर A रे थिबो नले B रे थिबो नले बोथ रे थिबो। मीनिंग कोन कहउछि, व्हिच आर आइदर इन A और इन B और इन बोथ। देखो आइदर A रे थिबो, दिस इज द पार्ट, और B रे थिबो, दिस इज द पार्ट, और बोथ रे थिबो। ओके, बुझि पाला वर्तमान। तापर नेक्स्ट देखो कोन लिखा आइछि, x belongs to A union B. If x belongs to A union B, this implies that x belongs to A or x belongs to B. तो एटू imply कोन हबो, x belongs to A or x belongs to A, first A लिखियो तापर B लिखियो, ठीक अछि। x belongs to A or x belongs to B, ठीक अछि। जदि x टा A union B रे अछि ताले तमे एटा imply करि परिबो। जदि तुम पाखरे अछि x belongs to A और x belongs to B, तमे डायरेक्ट इंप्लाई कर परिबो x belongs to A union B। देखो ए जो सब नोटेशन दिया जाइछि, ए जो सेट बिल्डर नोटेशन रे जहां भी लिखा जाइछि, ए सब जिंस तमन को बहुत रिक्वायर पड़िबो जेते तमे हायर स्टडीज करिवो किबा रियल एनालिसिस रे जेते बेले हमें थ्योरम मानन को प्रूव करिवो ना, सेते बेले थ्योरम मानन को प्रूव करा जो, सेते बेले एई दिरा नोटेशन तम मानन को दरकार पड़िबो, ठीक अछि। बेसिकली ए जो इंप्लाई करूछि स्टेटमेंट A x belongs to A union B implies that x belongs to A or x belongs to B, किबा जदि तमे रिवर्स पार्ट रे हमें जिबा, if x belongs to A or x belongs to B, then we can write that x belongs to A union B. This is the very important statement for proving the theorems on real analysis and metric spaces, topology, ए सब जेतले त माने पढिबो सेते बेले ए सब स्टेटमेंट त मानको बहुत रिक्वायर पढिबो, ठीक अछि। एग्जांपल देखो, if A is equal to 3 4 5 6 and B is equal to 4 6 8 and 10, find A union B. So basically हमें A union B रे तले कोन करबा, collection of all element which are in A, A रे कोन अछि देखो 3 4 5 6, और in B देखो ऑलरेडी हमें 4 6 को ऑलरेडी कलेक्ट करि सरचंदी, तले 4 6 लिखिबानी, और in B तले 8 10, और in both रे तो 4 6 अछि, हमें 4 6 नै आसले। जदि वेन डायग्राम रे देखिया पय चाहिबो, देखो दिस इज A, दिस इज B, देखो एठी इंटरसेक्शन काहे कि हला, काहे कि ना देखो कॉमन एलिमेंट अछंती, एठी भी 4 6 अछि, एठी भी 4 6 अछि, ताले इंटरसेक्शन तो हबो, सेट दिटांग भितरे इंटरसेक्शन आसीबो, ताले इंटरसेक्शन ले कि आसला 4 6, ठीक अछि। तापर एठी आसी गला ताले कोन 3 5
नेक्स्ट एटी आसीगला 8 10 ठीक अच्छे ताहले ए यूनियन बी जो रहिला देखो ए यूनियन बी ठीक अच्छे एटा होची ए सेट दिस इज ए सेट ठीक अच्छे दिस इज ए सेट दिस इज बी सेट ओके देखो एइटु जेतिक मु पिंक कलर रे कली एइटा कोन अछि देखो एइटा को हम लिखि परिबा ए डिफरेंस बी आगु को हम पढिबा तो एबे खाली सिस्टमैटिकली टिके मु जा लिखुछि देखो दिस इज ए डिफरेंस बी ए जो येलो रे जेतिक अछि सेटा को मु को लिखि परिबी बी डिफरेंस ए ऑलरेडी त मानन को आईडिया थिबो ठीक अछि एबे देखो ए जो ब्लू रे जेतिक मु पार्ट रे ब्लू पार्ट रे जेतिक मु एबे सेलेक्ट करली तो एइटा कोन आसीबो ए इंटरसेक्शन बी ठीक अछि ताले मु जदी एई तीनटा मानकर यूनियन नेबी यूनियन यूनियन ताले एइटा भी काहा को रिप्रेजेंट करिवो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करिवो कि नै ताले ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस थ्री सेट्स एंड दीज थ्री सेट्स आर डिजाइन आंको भीतर देखो कॉमन एलिमेंट किछि नाथि ए यूनियन बी बी को हम जो यूनियन ऑफ थ्री सेट्स लिखिले फर्स्ट सेट कोन अछि ए डिफरेंस बी म आगो को बुझेबी तो एबे देखो ए डिफरेंस बी जति कि पिंक पार्ट रे अछि पिंक पार्ट रे कोन अछि 3 4 सॉरी 3 5 अछि बी 5 यूनियन ए बी डिफरेंस है जति कि येलो पार्ट रे अछि केते अछि 8 एंड 10 ठीक अछि यूनियन ए इंटरसेक्शन बी रे कोन अछि कॉमन एलिमेंट कोन अछि 4 6 देखो एमान को जति मु यूनियन कर देबी तले कोन आसी जिवो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट आइदर इन दिस सेट और इन दिस सेट और इन दिस सेट तले कोन आसीबो 3 5 8 10 4 एंड 6 तले ये भी गोटे ऑब्जर्वेशन अछि हम को करि परियो ठीक अच्छे तो एबे आमे देखिबा अदर एग्जांपल किसी देखिबा देखो एग्जांपल कोन अछि लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर ठीक अछि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर x such that x is a prime number less than 10 তাহলে basically what is the member of a x such that x is a prime number less than 10 দেখো 2 is a prime number 3 is a prime number 5 7 this is all about a set তাহলে member কোন আসবে less than 10 and prime number তাহলে আসবে কোন 2 3 5 7 and b the member of b are देखो x such that x belongs to natural number and x is a factor of 12 collect all the factors of 12 basically 1 is a factor 2 is a factor 3 is a factor 4 6 and 12 these are the factors of 12 okay these are the factors for 12 now find a union b this is easy to find a union b in the set of all x such that x belongs to a 2 3 5 7 and the element which are in b ठीक है देखो ऑलरेडी 2 3 को हमें कलेक्ट कर सारछंती बाकी रहला 1 4 6 एंड 12 दिस इज द सेट a union b ओके बुझियला नेक्स्ट जीवा रिमार्क देखो रिमार्क रे कोन अछि एबे हमें दीटा सेट रे यूनियन लिखिले ठीक अछि जदि हम पाखरे से बळा थिबो n सेट थिबो ठीक अछि नंबर ऑफ सेट हम पाखरे n थिबो देले समानकर जदि हमें यूनियन लिखिबा a1 यूनियन a2 जदि हम पाखरे a1 a2 a3 डॉट डॉट an is n sets then their union is denoted by a1 union a2 union a3 union एटी देखो तीनटा डॉट दे देले कंटिन्यू अछि बिले हमें एटी जानिबो कि एमिति यूनियन a4 यूनियन a5 एबेला कंटिन्यू कर केते पर्यंत अछि an पर्यंत अछि यूनियन an तो एई जेति के जिंस को हमें एज ए सिंबल हमें एबेला लिख परिबा यूनियन I is equal to 1 from n I is equal to from 1 to n a I is equal to 1 to n ai so this symbol is represent for union of n sets बुझियला जो सिंबल हमें लिखिले एटा कोन यूनियन ऑफ n सेट्स ओके ताले जदी एटार डेफिनेशन कोन आसीबो if we write x belongs to union I is equal to 1 to n ai एटा कोन इंप्लाई करिवो this imply x belongs to ai for some i ता माने कोन एटार मीनिंग को मु जो लिखिली for some i ता माने कोन
This means either x belongs to a1 or x belongs to a2 or x belongs to a3 ଏମିତି continue ଯିବ or x belongs to an ଯେମିତି ଆମେ x କହିଥିଲେ କ'ଣ x belongs to ଯଦି a union b ଲେଖୁଛନ୍ତି this implies that x belongs to a or x belongs to b ଏଠି ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଥିଲା ଏଠି ଏବେ n number of set ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ n number of set ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା if x belongs to the union of n sets ତା ମାନେ କ'ଣ x is belongs to either one of them ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରେ ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବା either x belongs to a1 or x belongs to a2 or x belongs to a3 or ଏମିତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ or x belongs to an ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି for some I ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କୋଉ ଗୋଟେ I index I is represent for index ଠିକ ଅଛି ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ନଉଛି either a1 ରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା a2 ରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା an ରେ ଥାଇପାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ ଥିବ ସେ ଠିକ ଅଛି ଇନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ତମେ ଏଠି 2 ନେଇ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପାଇବ ଠିକ ଅଛି যদি এবে তুমি পাই আসলে ফরওয়ার্ড পার্ট যদি ব্যাকওয়ার্ড পার্ট ଯିବା তাহলে কোন আসবে if x belongs to ai for some I then this implies that x belongs to union of this set বুঝিଲ ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଥିଓରମ ବଗେରା ସବୁ ପ୍ରୁଭ କରିବ ଇଏ ତ ଟପୋଲୋଜିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟପୋଲୋଜି ପଢିବ ଠିକ ଅଛି ଟପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ତମର ଚେପ୍ଟର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଟପୋଲୋଜି ତମେ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦରକାର ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହି ଦଉଛି କି ତମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଅ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ଅପରେସନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଫ ସେଟ୍ସ intersection of sets intersection of sets the meaning କ'ଣ the intersection of two sets a and b denoted by a intersection b is the set of all elements which are common to both a and b the element which are common to both a and b Venn diagram रो देखि पारथुओ जोदा intersection हैला intersection रो common part जति आसला this is the common part for a and b this is the common part and the collection of all those elements is represent a intersection b okay then in mathematically we can write a intersection b is the collection of all those x such that x belongs to a it देखो असला and x belongs to b ताले एठी देखो a union b बेले हमें कौन लिखि दिले a union b जेतरा हमें लिखि दिले एठी थिला or x belongs to a or x belongs to b ताले जे कोन either a रे थिबो नले b रे थिबो ठीक अछि किंतु इंटरसेक्शन बेले आसी गला कोन and x belongs to a and x belongs to b a and represent करूची common element बुझियला x belongs कोन करूची x the and कोन represent करूची common element a रे भी common थिबो b रे भी common थिबो a b रे जतिक element common अछि collection of all those element represents a intersection b बुझियला ताले a b रे जतिक common थिबे तो तार collection टा कोन हे जिवो a intersection b ताले systematically जदि हमें देखिबा ताकू एटार मीनिंग कोन if x belongs to a intersection b ताले एबे हमको डेफिनेशन कोन गला this implies x belongs to a and x belongs to b बुझला x belongs to a and x belongs to b okay ताले ये हे गला तमरो फॉरवर्ड पार्ट then what is the converse part if x belongs to x belongs to a and x belongs to b if x belongs to a and x belongs to b then x implies x belongs to a intersection b ता माने कोन if x belongs to both this set then this implies x also belongs to their intersection okay x is belongs to their intersection this is very important okay remember this thing and equivalently we can write if x does not belongs to a intersection b ठीक अछि जदी एठी गोटे धर एलिमेंट अछि देखो ए जो वेन डायग्राम अछि if x belongs to this portion okay then what we can write x does not belongs to or not belongs to a intersection b ताले both part रे त नै ताले x जदी एठी थिबो किबा एठी थिबो कोठी भी अछि in particular if x belongs to this side what is the meaning if x is not belongs to b then we can write this implies that x not belongs to a or x not belongs to
बी। तो एटा देखो, एटार बेसिकली मीनिंग कौन, जदि एक्स ए इंटरसेक्शन बी रे नाही माने कौन से कहूची एक्स एट जो और आसिला ठीक अच्छे ये स्टेटमेंट रे ए जो और आसला और कहा को रिप्रेजेंट करे, यूनियन को रिप्रेजेंट करिवो ठीक अच्छे, एक्स का और कहा को रिप्रेजेंट करिवो यूनियन को, एंड रिप्रेजेंट करिवो इंटरसेक्शन को। से कहूची जदि एक्स कौन कहूची इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ताले ए पार्ट रे नथिवो ताले एक्स बिलोंग्स टू आइदर हियर हे पारे, हियर और हियर और हियर ठीक अच्छे कोठी भी हे पारे, ताले से कहूची एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे देखो तुमको एटा वेन डायग्राम मु बुझाउछ, ऑलरेडी तुम जानिछो व्हाट इज वेन डायग्राम। This is A set, this is B set, and this represent their intersection. Okay. Now, X not belongs to A. ता माने कौन? यदि एटा मोर A set हुए ठीक अछि ताले एटी कोन कहूची X not belongs to A ताले एई भितर सेट को छाडी कि X आउ कोठी थिबो ताले X मु फास्ट एई पार्ट को ड्रॉ करूची ठीक अछि ताले देखो X एटा धर A set एटा B set देखो छी X not belongs to A ताले not belongs to A माने कोन आसीबो ए को छाड़ी बाकी कोड थाई पारे दिस पार्ट एक्स ताले ए को पार्ट रे थाई पारे बुझाला जति कि ब्लू लाइन ड्रॉ करछि तो सही पार्ट रे कोड एक्स थाई पारे। नेक्स्ट जो दे गला और माने हमें यूनियन नबा और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ताले एटा जदी एटा को मु बी सेट नेबी ताले बी को छाड़ी कि बाकी जति कि पार्ट अछि सही पार्ट रे कोड थाई पारे बी रे रहइबनी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी दैट मींस x belongs to b complement मु आगो को कहबी व्हाट इज b complement ओके तले b सेट रे नाही तले b बाहर कोड थिबो तले एटा होची b सेट थिला ठीक अछि b सेट बाहर माने मु एबे पिंक रे जति प्लॉट करछु देखो तले एटी कोड थिबो b सेट को हमर जिबार नै ले एमिति को पार्ट रे x थाई पारे एबे हमको यूनियन नबार अछि तले यूनियन जदी नबार अछि देखो एबे केते की पार्ट जमा इंटरसेक्शन लाइन आसी नै ए जो पार्ट ताको छाड़ दियो अरे ठीक अछि एई पार्ट ता हमरो नाही एई पार्ट रे देखो कोनोसी पिंक लाइन की ब्लू लाइन नाही ता माने कोन x तले एटी कोड रहला तले बुझी पारलो कि नाही एउटा एटा इंप्लाई हे गेला कि नाही फास्ट देखो x ता हमर कोड थिला x ता ए इंटरसेक्शन b रे नाही कोन इंप्लाई कला तले x एई भीतर ए जत्ते कि देखो ब्लू लाइन आ पिंक लाइन अछि सेटा रे यूनियन नै गेला हे जिवो सेटा सेठी कोड थाई पारे बुझी पारलो कि नाही वेन डायग्राम रो बुझीबाटा इजी होबो देखो फास्ट मु कोन कहली x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b ताले x मोर एई पोर्शन रे नाही ता माने कोन ताले x ता कोड थिबो ताले x ता बाकी सेति की पोर्शन छाडिला परे रेस्ट जेति की पोर्शन थिला सेई को पोर्शन ले गोटे x थिबो ताले सेइटा को हमें एज ए सेट नोटेशन रे केवडा लिखिबा ताले देखो ताले सेइटा को इंप्लाई करिवो x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इट और असला और मीन यूनियन ताले एटा कोन लिख परिबा जदि एटा अछि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b ताले एटा इंप्लाई करिवो कोन x बिलोंग्स टू बेसिकली ए इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट ठीक अछि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट ताले त माने डी मॉर्गन थ्योरम रो गोटे ना सुनेथिबो दिस बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज देखो एटा कोन आइ जिवो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बुझेला बुझेला कि नहीं ताले एटा कोन इंप्लाई करिवो ताले आइदर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट देखो a कॉम्प्लीमेंट रे माने कोन x a रे नहीं a कॉम्प्लीमेंट रे अछि मु कॉम्प्लीमेंट पाई आइदर a ऊपर c लिखिबारे किबा a ऊपर बार एमिति डैश चिन्ह देइ पारे a डैश ताले दिस रिप्रेजेंट फॉर a कॉम्प्लीमेंट तो हमें डिस्कशन करिबा कि a कॉम्प्लीमेंट कोन एबे जस्ट आइडिया नै था ठीक अछि ताले x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट ताले एउठ हमें कोन इंप्लाई कर परिया x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b बुझेला एबे आइडिया आसला कि नै वेन डायग्राम रो एबे सब किछ बुझी पारलो कि नै देखो एते डीप रे पढिवार माने ए सब जिंस तुमको आगो को कोउठ ना कोउठ दरकार पडियो ठीक अछि ए जिंस तुमको आगो को कोउठ ना कोउठ दरकार पडियो सो दैट तमे भलसे रे बुझो एबे बुझी पारलो तो एबे मोर कहिवार माने कोन इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b ताले तमे एबे वेन डायग्राम रे देखि पारलो कि तमरा जदी एई पार्ट रे x नाही ताले x को पार्ट रे थिबो ताले x को पार्ट रे थिबो एबे जानि पारलो x
एई पार्ट रे सब रहइबो एई पार्ट रे सब रहइबो जति की पार्ट रे मु देखो येलो मार्क कर देली एई पार्ट रे x रहइबो एठी किछ रहइबोनी ताले जति की पार्ट मु सैडेड करिछि त से सैडेड पार्ट को मु से सेट नोटेशन रे रिप्रेजेंट करबी ताले कोन करबी ना x बिलोंग्स टू x belongs to a complement union b complement बुझिला x belongs to a complement or b complement बुझि पारल कि नहीं बुझिला जहाँ ये बुझेली तुम बुझी पारल कि नहीं बुझिबा नेक्स्ट एबे एग्जांपल देखिबा let a is equal to 1 3 5 7 9 and b is equal to 2 3 5 7 11 and 13 then find a intersection b a intersection b कौन हबो फाइंड करो ताले a intersection b हमें कोबळे लिखिबा कॉमन एलिमेंट कौन अछि देखो a intersection b is the collection of all those elements which are common to both set देखो ताले कौन अछि एटी 3 अछि एटी 3 अछि कॉमन 5 7 एटी भी अछि 5 and 7 these three elements are common to both set so collect all these elements 3 5 7 this collection is represent intersection okay जदि तुम भेन डायग्राम रे देखिया पई चाहो this is a set and this is b set since intersection contains some element then this element are of course in this place okay this is 3 5 7 and rest element 1 9 is here and the rest element in b is 2 11 and 13 ठीक अछि okay next example देखिवा if a is equal to x such that x belongs to n and x is a factor of 12 already हम एटा फाइंड करथिले पूर्वरु ताले कोन आसीबो देखो 1 2 3 4 6 and 12 these six elements are the factors for 12 okay next b set is the collection of all those elements which are factor of 18 कोन आसीबो 1 is a factor 2 3 is also a factor and here 6 is a factor and 12 is a factor okay here 9 is also a factor of 18 this is the collection for a set this is the b set okay what is their intersection common to both set a and b collect all those elements which are common to both set basically these are 1 2 3 and 6 these four elements are common to both set okay okay this is the a intersection b and now the remark the intersection of n sets a1 a2 a3 dot 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 an is denoted by this a1 intersection a2 intersection a3 intersection देखो ये तीनटा लाइन माने कंटिन्यू ठीक अछि कंटिन्यू करू छै एबोला प्रोसेस intersection an this is denoted by this symbol intersection I is equal to 1 to n ai चला this is the symbol for union of n set this is the symbol for union of intersection of n set this symbol represent for intersection of n sets okay now if x belongs to the intersection of n set then what is the meaning this implies x belongs to ai's for all I equal to 1 2 3 dot dot n माने एठी मु एया कहया पय चाहू छी जदी x n सेट रो इंटरसेक्शन ले अछि ता माने कोन सब सेट रो कॉमन हेतो दरकार से एलिमेंट so this implies that x belongs to ai for all I is equal to 1 2 3 dot 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 n माने सब ai रे रहिबे सब ai रे x आसीबो बुझियला in particular जदी हम कहबा x belongs to intersection of I is equal to 1 to 2 ai तले एटा कोन 1 to 2 जाई छि तले x belongs to a1 intersection a2 एबे हमें पढि गेसले ना जदी दीटा सेट रो इंटरसेक्शन ले x अछि एटा इंप्लाई कोन करिवो x belongs to a1 and x belongs to a2 तले a1 ले भी अछि a2 भी अछि तले एटा को जदी ए सिंबल ले लिखिया पई चाहिबे तले हम कोन लिखिबो दिस implies x belongs to ai for all I is equal to 1 2 तले for all I रे से रहिबो बुझियला तो तमने जते बेले भी पढु छ ना ए सेट नोटेशन ताकू को बेला कोन लिखा जो ताकू धरे बुझो ठीक अछि यूनियन ले कोन पढिलो if x belongs to union I is equal to 1 to n ai
If X belongs to the union of n set, that implies X belongs to AI for some I is for some I. देखो एटी for some I टा may be all I है पारे, but it is X if X belongs to intersection of n set I is equal to 1 to n AI, তাহলে এটি কেবল ইমপ্লাই করিব X belongs to AI for all I. এটি for some হেলে intersection হবো নাই. intersection কোন कहला? intersection कहूची कि common to all sets. बुझिला? ଏବେ ଯିବା what is basically meaning of disjoint sets. ତାହେଲେ disjoint କହୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ନଥିବ, କିଛି କନେକ୍ସନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଦିଟା ସେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଦିଟା ସେଟ୍ ଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟିସନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିବା ତାହେଲେ two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is empty set. If A intersection B is empty set, then these two sets are called disjoint set. This is A set and this is B set. Common element किछि नथिबो. A and B have no common element. बुझियला? यदि common element किछि नाही ताले these sets are called disjoint set. Okay. एबे देखो गोटे अछि pair wise disjoint. ठीक अछि? pair wise disjoint. देखो पेयर वाइज डिसीजन गोटे टर्म अछि, एटा केतला आसो जदि हम पाखरे देखो n सेट अछंती. ठीक अछि? n टा सेट अछंती, आको भीतर हमें जे कोनोसी दीटा एलिमेंट उठेबा. ठीक अछि? धरा जाऊ मु a1 गोटे आनिली आ a2 गोटे एलिमेंट आनिली, तांको भीतर इंटरसेक्शन करिवि. इफ दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी, दैट मींस these two sets are disjoint. ए बेला मु जेते भी दुईटा पेयर नेबी. ठीक अछि? डिस्टिंक्ट पेयर नेबी नाइ कि मु a1 सहित इंटरसेक्शन a1 नेबी. दिस रिप्रेजेंट और दिस गिव्स अस a1 intersection of itself, intersection of same sets equal to say itself आसियो. बुझल? ताले एठी एबे कोन हमें बुझिले कि हमें जदि दीटा डिस्टिंक्ट पेयर को नेकी तांकर इंटरसेक्शन करिबा और इंटरसेक्शन टा एम्प्टी सेट आसे फॉर ऑल जेते कि भी हम पाखरे सेट अछि, जेते कि भी हम पाखरे सेट अछि, से सेट भितर जदि हमें पेयर वाइज किछि सेट कलेक्शन करिबा और तांकर इंटरसेक्शन एम्प्टी आसे, ताले हमें ताको कोन कहबा पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट. बुझला? पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट. हमें देखो ए टर्म रे भी बुझि पारिया, से कहउछि ना पेयर वाइज डिस्जॉइंट. ताले हमें एठी जते बेले डिस्टिंक्ट पेयर मान को कलेक्शन करिबा और से डिस्टिंक्ट पेयर मान को इंटरसेक्शन जदि एम्प्टी आसिला, ताले दिस रिप्रेजेंट पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट्स. these are पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट्स. बुझला? एबे नेक्स्ट जिबा एबे आसला कोन इंटरसेक्टिंग सेट्स. इंटरसेक्टिंग सेट्स माने कोन? सेट टा इंटरसेक्ट करिथिबो, ताले तांकर इंटरसेक्शन ले किछि एलिमेंट थिबो, ताले इंटरसेक्शन शुड बी नॉन एम्प्टी. ताले टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग. कोडी भी जदि एमिति तमे क्वेश्चन पाउजो कि इंटरसेक्टिंग टर्म अछि, ताले तमे सेउटू डायरेक्ट बुझि जिवो कोन? ताले द इंटरसेक्शन शुड बी नॉन एम्प्टी. ताले इंटरसेक्शन शुड बी नॉन एम्प्टी माने कोन? Each intersecting case रे the cardinality or number of element in A intersection B is less or equal to 1. बुझिला? लेस और इक्वल टू 1. ताले एटा डायरेक्ट आकु ही फॉलो करिवो कि इंटरसेक्शन ले 1 और मोर देन 1 एलिमेंट अछि. यदि इंटरसेक्शन रे 1 और मोर देन 1 एलिमेंट अछि, ताले कोन हो? इंटरसेक्शन रा तो नॉन एम्प्टी हला कि नै? तो तुमको कोऑर्डिनेट करिया पय पड़िबो. इफ टू सेट्स आर डिस्जॉइंट, then A intersection B is equal, the cardinality of A intersection B is equal to 0. Why? We know the A intersection B is equal to empty for disjoint set. For intersecting set, the cardinality of A intersection B, if we have only two sets, then the intersection contains more than one element. बुझला? नेक्स्ट कौन अछि? एग्जांपल. एबे देखो A सेट हमको दिया है, B सेट हम पाखरे अछि, C सेट हम पाखरे अछि. फाइंड A intersection B and A intersection C. And what do you conclude? तो एठे हमें कौन conclude करलु? तो देखो what is A intersection B? Collection of all those elements which are common to A and B both. देखो एठी कोन अछि 1 3 5 7 9, एठी अछि 2 4 6 8. No element are common to both A and B, so that the intersection is empty set. Okay. Now what about A intersection C? Basically collect all those elements which are common to A and C. 1 3 5 7 9. Here is 2 3 5 7 11. Here 5 and 7 are common to both A and C. So collect those elements.
ताले कोन कसला A intersection B is non-empty, so A intersection C is intersecting but A and B are disjoint. A and C are intersecting but A and B are disjoint set. बुझिला ଏବେ ଦେଖିବା difference of sets. What do you mean by difference of sets? For any set A and B, their difference A difference B is defined as A difference B is equal to x collection of all those x which are in A but not in B. एटी end ଆସିଲା ठीक ଅଛି. That means x such that x belongs to A and x does not belongs to B. ବୁଝିଲା देखो ये कौन कहला A difference B रे माने कौन collection of all those element x such that x belongs to A but not in B and x does not belongs to B. ताले सही भले x मान को हमें collection करिबा जो गुडा only x रे थिबो but only A set रे थिबो but B set रे न थिबो बुझला. Similarly we can define B difference A. How we define B difference A is the collection of all those element x such that x belongs to B set, x belongs to जोटा फास्ट दिबो x belongs to B set and x does not belongs to A. ओके तले एडी हमें कोन मीन कोन आ रहउची x if x belongs to A difference B. ओके समटाइम तमे देखिबो किछि बुक रे एमिति नोटेशन लिखा हितो A difference B तो एटा टिके बुझिबा को इजी होय काहे ना एठी देले पिला को किछि डिफरेंस माइनस पड़ दियंते माइनस को दाउछ डिफरेंस सेट बेलको तमे कोन पड़िबो डिफरेंस A difference not my A minus B बुझला. आकु तमे रीड करियो कोन A difference B not A minus B. ओके तो समटाइम तमे ए वाला नोटेशन भी देखिबो એટલે if x belongs to A difference B, what is the meaning? That implies x belongs to A and x does not belongs to B. ताले एठु हमें कोन बुझुचे कि A and B रे जति के कॉमन एलिमेंट अछंती तांको हटेई दियो बाकी रेस्ट एलिमेंट को कलेक्ट करि आनो ठीक अछि. देखो एठी कोन x belongs to A but x does not belongs to B ताले माने A B रे जति कॉमन एलिमेंट अछंती तांको हटेई दो ठीक अछि. हम एग्जांपल ले बुझिबो ठीक अछि. जदि हमें लिखुचे x belongs to B difference A ताले एटा कोन आसीबो x belongs to B and x not belongs to A ताले एठी भी देखो सेम होची कि नै B A भितरे जति कॉमन एलिमेंट अछंती तांको बाद कर दियो बाकी B सेट रे एलिमेंट को लिखि दियो काने x belongs to B अछि ना एठी देखो कोन अछि x belongs to A but x does not belongs to B ताले A B भितरे जति की कॉमन एलिमेंट अछन तांको बाद कर दियो रेस्ट एलिमेंट A रे जति अछि लिखि दियो. एठी कोन कहउची x belongs to B and x does not belongs to A ताले B A भितरे जति कॉमन एलिमेंट अछन तांको बाद कर दियो रेस्ट एलिमेंट को लिखि दियो ठीक अछि. ताले एबे एठी कोन आसी देखो A difference B जदि वेन डायग्राम रे देखिबो देखो दिस पार्ट इज A intersection B कॉमन पार्ट देखो टोटल A सेट रु कॉमन एलिमेंट जति अछंती तांको हमें बाद कर देला परे जति कि A सेट रे एलिमेंट रहले दिस रिप्रेजेंट A difference B. सिमिलरली B difference को हमें वेन डायग्राम रे देखिबो जदि एटा आसीबो B difference एति की पार्ट तले एटा कोन होउची टोटल B सेट भितरु जति कॉमन एलिमेंट अछंती तांको हम बाद कर दे कि B सेट रे एलिमेंट को ही प्लॉट करले एठी पार्ट शेडेड करले तले दिस रिप्रेजेंट B difference. एबे बुझी पारलो A difference B रो मीनिंग कोन B difference A रो मीनिंग कोन हम गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल नै के एबे बुझिबा ठीक अछि. देखो एठी जो पर्टिकुलर एग्जांपल अछि वर्तमान देखो एठी कोन कहउची A set रो एलिमेंट कोन x such that x belongs to A and x is a factor of 6 ताले बेसिकली व्हाट इज द A set basically 1 2 3 and 6. These are factor of 6 and B set is equal to x x belongs to natural number such that x is a factor of 8. So factor of 8 माने कोन हम लिखिबा 1 2 4 8. These are the factor for 8. Now A union B A intersection B कोन आसीबो देखो A union B collection of all those element which are either in A 1 2 3 6 or in B ताले एटी हमें कोन लिखिबो 4 8 काहे कि ना ऑलरेडी 1 2 इंक्लूड हे ही सारी जेठी. Then what is A intersection B? Basically A intersection B is the collection of all those element which are common to both. ताले A intersection B रे कोन कॉमन अछि हमर को एलिमेंट आसीबे जोटा A और B रे कॉमन थिबे ताले 1 2 बुझला 1 2 आसी गेले ताले एबे हमें फाइंड आउट करबा A difference B
बेसिकली व्हाट इज ए डिफरेंस बी एबे हमें पढ़ी आसिले x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी ताले x बिलोंग्स टू ए हेतिबो बट सेटा b रो मेंबर हे नथिबो ताले देखो a रो मेंबर हेतिबो बट b रो मेंबर नुह देखो एटी 1 a रो मेंबर सेटा b रो भी मेंबर ताले एटा हमर a डिफरेंस भी आसीबोनी 2 a रो भी मेंबर b रो भी मेंबर ताले हमको b रो जोडा मेंबर हे नथिबो सेगुडा को कलेक्ट करियार अछि collection of all those element which are only member of a but not in member of b ताले 1 2 both member of a and b so हमें एठी 1 2 को कलेक्ट करियो नै a डिफरेंस b पई ताले a डिफरेंस b रे की आसीबो 3 3 is only belongs to a but not in b next 6 also 6 is in member of a but not a member of b set ताले what is a difference b basically this is 3 and 6 okay ताले एटा सदी सिस्टमैटिकली हमें बुझिया पई चाहिबा हमें कोन करबा a सेट रे b सेट रे एलिमेंट को बात कर दबा a सेट रु b सेट रे एलिमेंट को बात कर दबा ताले a सेट रे कोन अछि 1 2 3 6 b सेट रे एलिमेंट कोन अछि 1 2 4 5 सॉरी 1 2 4 8 ताले एटा b सेट रे एलिमेंट कोन अछि 1 2 ताले a सेट रो हमें सेति को डिस्कार्ड कर दबा बा सेति को रिमूव कर दबा ताले बाकी रेस्ट जेति रहइला सेटा होछि a डिफरेंस b सिमिलरली व्हाट इज b डिफरेंस से b सेट भितरु a सेट रे एलिमेंट को बात कर दबा b सेट रु a सेट रे एलिमेंट को बात कर देखो b सेट रे कोन अछि 1 2 4 8 a सेट रे एलिमेंट 1 2 3 6 ताले कॉमन कोन अछि 1 2 ताले ए 1 2 को डिस्कार्ड करला परे बा रिमूव करला परे कोन बचला 4 8 ताले 4 8 इज द कलेक्शन ऑफ दिस टू एलिमेंट रिप्रेजेंट b डिफरेंस ताले एठी तो माने कोन देखिलो देखो एठी गोटे ऑब्जर्व तमे करि परिबो एबे जदि वेन डायग्राम रे तुमको एबे देखिया पय चाहिबी ताले देखो कॉमन कोन अछि 1 आउट 2 नेक्स्ट a सेट एटा b सेट होछि एटा ताले एठी रहइबो 3 6 एठी असला 4 8 ताले a यूनियन b आ a इंटरसेक्शन b तुम माने बुझि सारछो एबे जदि मु a डिफरेंस b कथा कहबी ये दिटा तो तमर ऑलरेडी तमर जानि गले एबे हमें a डिफरेंस b कथा जदि कहिबा ताले एटा कोन आसला x belongs to a and x belongs to a ये कोन थिला एंड अछि ना and x does not belongs to b ताले x a रो मेंबर हेतो बट b रो मेंबर नो ताले देखो ए जो 1 2 टा a रो भी मेंबर b रो भी मेंबर ताले से केबे आसी परिबोनी काइना b रो मेंबर न होइतो दरकार ताले एई पार्ट टा कि नाही करतो एई पार्ट ताले इक्विवेलेंटली वी कैन राइट a डिफरेंस b इज इक्वल टू a डिफरेंस a इंटरसेक्शन b एटा भी एटार मीनिंग कोन x is a member of a but not a member of a intersection b बुझिलो एटा पे हम लिखि परिबा तो तुमको बेले बेले एमिति भी लिखिया पई पड़िबो कि a डिफरेंस b इज इक्वल टू ऑल a सेट डिफरेंस a इंटरसेक्शन b तो हम ए इंटरसेक्शन एलिमेंट बा कॉमन एलिमेंट को ही तो बात करछंती तो इक्विवेलेंटली वी कैन से a डिफरेंस b इज इक्वल टू a डिफरेंस a इंटरसेक्शन b आको मन रखी दिबो तुम एबे वेन डायग्राम रे बुझी पालो कि नहीं दिस रिप्रेजेंट a इंटरसेक्शन b and this pink line this shaded region which are shaded by pink color this represent a difference b okay and this is the whole set a we remove this part only this represent the common part or a intersection b so equivalently we can write this similarly we can write b difference a is equal to b difference a intersection b similarly we can understand this okay next visible symmetric difference of two set the symmetric difference of two sets a and b denoted by a triangle it the triangle दिया होची b is defined by denoted by this symbol and defined by a symmetric difference b is equal to a difference b union b difference a बुझियला ताले जदि एठी लिखा जिवो x belongs to a symmetric difference b ताता मीनिंग कोन हबो ताले x belongs to a difference b or x belongs to b difference a और एटा हेगला implies यदि बैकवर्ड आसीबो if x belongs to a difference b or x belongs to b difference a ताले this implies x belongs to a symmetric difference b बुझला ताले बेसिकली एटा जदि हमें बर्तमान देखिबा वेन डायग्राम रे देखिबा ताले वेन डायग्राम रे हमें किमि देखि परिबा देखो जदि मो पाखरे देखो एटा अछि a सेट एटा मो पाखरे अछि b सेट ठीक अछि
this is A set, this is B set. This represent A intersection B. Okay, symmetric difference ताले कौन आसीबो से कहउची कि आमको दरकार कोन symmetric difference टा union of A difference B and B difference A. ताले ए जो पार्ट रहिला this part is A difference B, ठीक अछि, this part is A difference B and B difference A को पार्ट आसीबो, this part is B difference A. ताले एबे तमे जानि परलो कि सिमेट्रिक डिफरेंस टा कोन आसीबो ताले एई पार्ट टा और एई जो पार्ट रहिला एई दुटा पार्ट रे यूनियन ऑफ दिस टू पार्ट. ओके, यूनियन ऑफ दिस टू पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बुझला. ताले इक्विवेलेंटली एटा हम कोन लिखि परिबो, देखो ए टोटल पार्ट टा कोन देखौची, ए टोटल जति कि हम पाखर अछि एई ए पार्ट एंड एई पार्ट, एटा होची कोन ए यूनियन बी. ताले ए यूनियन बी एटू जदि आमे डिफरेंस कर दबा, देखो ए कॉमन पार्ट को आमे कोन लिखन ए इंटरसेक्शन बी. ताले ए सेम आमे वेन डायग्राम करियो कि नै, सेम वेन डायग्राम तो आसीबो कि नै. ताले इक्विवेलेंटली वी कैन राइट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी. एटा जहा को देखो ए जो रिलेशन थिला हम पाखरे एउठु आमे जो वेन डायग्राम टा प्लॉट करले ए जो हम पाखरे एक्सप्रेशन होला आपन तो इस सेम कोन आसुची वेन डायग्राम आसुची. ताले ए दीटा सेट कोन होबे इक्वल हेबे. ताले जदी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अछि तमे को दीटा वे रे डिफाइन कर परिबो, आइदर दिस इज द यूनियन ऑफ ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए और यूनियन और ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी. these are two equivalent statement. okay, एबे बुझि पालो सिमेट्रिक डिफरेंस माने कोन, एबे एग्जांपल देखिबा. देखो if A set is equal to A B C D and B set is equal to B D F Z. okay, next find A symmetric difference B. basically A symmetric difference B कोन आसीबा कथा, this is the union of A difference B union B difference A. A difference B कोन आसीबो collection of all those element which are element of A but not in B. ताले A B C D डी B D अछि, ताले B D को बात कर देला पर हम पाखरे डी कोन होला A and C union B difference A. ताले B सेट रे एलिमेंट की अछि B D जोड़ा की A रे भी एलिमेंट अछि, ताले ताकू बात कर देला हम पाखरे कोन होला F Z. ताले यूनियन हे गेले कोन आसी गला A C F Z. this is the symmetric difference A and B, symmetric difference of A and B or asymmetric difference B. Or equivalently if we can we are also find like this, A symmetric difference B is A union B difference A intersection B. What is A union B? Collection of all those elements which are in E, which are on A or in B or in B. The collection is looks like A B C D and F Z. Difference, what is common element to both A and B or A intersection B? Basically is B and D. Now this difference shows A symmetric difference B, and let this is D set and this is E set. Let D difference E, D difference E, collection of all those elements which are in D but not in E. Here we discard or remove all those elements which are the member of E in set D. From set D, we remove all those elements from set D which are also member of E. Here B and D, these two elements are member of E, so we remove these two elements. So we give, so the remaining elements are A, C, F and Z. Here and here we get the same set. A difference B union B difference A is equal to A union B difference A intersection B. Okay. Now, what is complement of set A? Complement of set A. Let U be the universal set and A is a subset of universal set U. Then the complement of A is denoted by either A prime or A ऊपर C लिखा दिबो और U difference A. देखो U difference A mean U difference A, basically collection of
all those element x so that x belongs to the universal set and x does not belongs to set A. The u रो element ହେଇଥିବ but a रो element ହେଇନଥିବ ତ ସେଇଟା କଣ represent କରିବ? This represent a complement. ବୁଝିଲା? So a complement is equal to collection of all those element in U such that x does not belongs to A. A ର member से ହେଇନଥିବ. Clearly x belongs to A complement. ଯଦି ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି x belongs to A complement, this is immediately implies that x does not belongs to A. If x does not belongs to A, this is immediately implies that A belongs to A complement. এই जो notation हमको बहुत सारा दरकार पड़िबो जेतेबेले तमे रियल एनालिसिस टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस रे सब थ्योरम प्रूव करिवो ये जो नोटेशन बा ए जो एक्सप्रेशन तुमको बहुत दरकार पड़िबो बुझियला ताहले जदि हमें वेन डायग्राम रे देखिबा ताले एठी x टा कोन हेतिबो जदि x टा a कॉम्प्लीमेंट रे अछि x a कॉम्प्लीमेंट रे अछि ताले से a रे एलिमेंट हे नथिबो ताले से पे सैडेड करा आइस देखो a रो बाहर जति रहइल आउटसाइड ऑफ a तदे जदि a कॉम्प्लीमेंट रे मीनिंग कोन? If x some element belongs to this set means this element is lies outside of A. Okay, consider the universal set like 1 2 3 4 5 6 7 8 and A is equal to 2 4 6 and 8. Then what is A complement? A complement is U difference A. Here is U and here is A. Then remove all these element which are member of both set U and A. Then collect all those element. Here the common elements are 2 4 6 and 8. Remove this thing and collect the remaining elements. The remaining elements are 1 3 5 and 7. This represent A complement. Second bit, again find its complement. A complement of A complement. A complement of A complement. This represent U difference A complement. Okay. এই ভিতরে যে সেট আছে তার আমি কোন নেব ডিফারেন্স নেব U difference A complement. What is the set? Collection of all those element which are in U but not in A complement. তাহলে এবে দেখো 1 A complement रे अछि 2 A complement रे नाही তাহলে তাকু कलेक्ट करिवा 3 A complement रे अछि 4 A complement रे नाही एबे एबे देखो 5 5 देखो कोड अछि U रे अछि A complement रे अछि ताले ताकु नबानी 6 A U रे अछि बट A complement रे नाही नेक्स्ट 7 U रे अछि A complement रे अछि 8 U रे अछि बट A complement रे नाही ताले आसीगला सेट 2 4 6 8 this is equal to set A. ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ complement of A complement is equivalent to set A. ବୁଝିଲ? नेक्स्ट देखो एबे किछि रिजल्ट अछि ठीक अछि ए रिजल्ट गुडा को हमें एक सिस्टमैटिकली माइंडफुली टिक हम पढिबा देखो if A subset U what is the meaning? U is the universal set and A is any subset of U. से कौन कहिछि फर्स्ट बिट रे प्रूव दैट complement of U set or complement of universal set is equal to empty. माने कौन आमे एबे जदि डेफिनेशन वाइज लिखिबा U complement is U difference U set रे एलिमेंट को सब जदि हम बात कर दबा ताले कौन रह गेला एम्प्टी सेट तो रहला ना ताले एठी जदि हमें सिस्टमैटिकली सेट नोटेशन लिखिबा U complement is equal to x belongs to U such that x does not belongs to U. ता माने कोन x U रे belongs करिवो पुनी x U रे belongs करिवोनी ताले एटा कोन हेतिबो केवल एम्प्टी सेट केस रे एटा पॉसिबल बुझियला नेक्स्ट complement of empty set ताले कोन empty set difference U set ताले एठी कोन आसो देखो x belongs to empty this is the अच्छा हमको एम भूल लिखिली एठी कोन करा जिवो यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ने एम्प्टी सेट ना एठी कोन ए एम्प्टी सेट रा हमें कॉम्प्लीमेंट बाहर करछनी ताने ऑल दोस एलिमेंट इन यू बट नॉट इन 5 रे तो केमती कोनोसी मेंबर ना ताले कोन आसी जिवो ऑल मेंबर्स फ्रॉम यू ताले 5 कॉम्प्लीमेंट कोन हे जिवो यू x belongs to u it does not such that x does not belongs to 5
दिस इज मीनिंगलेस फाइ रे तो कौन से एलिमेंट नहांती आपको लिखिबाटा भी मीनिंगलेस ताले x बिलोंग्स टू u हे गला ताले फाइ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u ऑलरेडी एटा तुम मन को प्रूव करी देखे सलेनी ए कंप्लीमेंट रो कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू ए सेट माने कोन जदि हमें फास्ट एटा पई लिखिबा x बिलोंग्स टू u such that x does not belongs to a complement ताले if x does not belongs to a complement then x belongs to a this is equal to a set बुझला A union A complement फर्स्ट हमको वेन डायग्राम रे देखि दउची दिस इज A and this part is A complement A and A complement रो जदी यूनियन A complement हम कोन दउची पूरा होल सेट यूनिवर्सल सेट U दे दउची तो सेटा को हमें जदी एबे सिस्टमैटिकली प्रूव करबा A union A complement this is equal to x belongs to U such that x belongs to A union A complement A union A complement को हमें जदी लिखिबा कोन लिखिबा x belongs to A यूनियन पे आम लिखा और x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट ताले एटा बे कोन हेजो देखो x बिलोंग्स टू ए और तो और रोइला x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट ता माने कोन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए ताले एठी कोन लिखा देखो x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू ए ता माने कोन x a रे भी अछि एंड x a रे भी नाही x a रे भी अछि x a रे भी नाही ता माने कोन एटार मीनिंग कौन एक्स ए रे अच्छी और एक्स ए रे नहीं ताले ए रे नहीं माने ए बाहर कोड आउटसाइड थिबो ताले से दिरा समस्त यूनियन हे गेले कोन आसी जिवो यू आसी जिवो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ताले देखो एट नोटेशन केवल एंड हे जिवो ए बिलोंग्स टू देखो बाकी सब जिंस सेम ए और जगह रे हे जिवो एंड ताले एक्स ए रे भी रहबा दरकार एंड एक्स ए कंप्लीमेंट रे भी देखो हाँ ये देखो x a रे भी रहा दरकार एंड x टा a कंप्लीमेंट रे भी रहा दरकार एटा केबे साइमल्टेनियसली ट्रू होबो कि माने a कंप्लीमेंट रे हमें कलेक्शन करूछन जोडा a रो एलिमेंट नुहो ताले केमिति कॉमन एलिमेंट कमिति आसीबो सेटा सिस्टमैटिकली जदि हमें पुनी दारा डेफिनेशन यूज कर दबा x डज नॉट बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a ले एई केस टा केतेला आसीबो जते एम्प्टी सेट हे जिवो बुझला एई जो चारिटा जिंस रहिला आकु त माने भल समन रखियो जेमिति u कंप्लीमेंट इज इक्वल टू empty set complement is equal to universal set A intersection A complement is equal to empty set A union A complement is equal to universal set ये जो चारिटा सेट रहिला ये बहुत इंपोर्टेंट तुम मन आकु तुम माने भलसे मन रखियो ठीक अछि बुझी बाला एबे हमें जीवन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन अछि लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट देखो एटा हम नेक्स्ट लेक्चर रे एठू आगो को कंटिन्यू करबा ठीक अछि तो एबे पर्यंत लेक्चर जो माने कंटिन्यू करूतले जदी लेक्चर रे तमनु किछि इन्फॉर्मेशन जोगुडा तमे नुवा सिखिलो जदी समिति किछि कंटेंट तुमको मिलिछि ताले ए वीडियो को गोटे लाइक करिवो ठीक अछि सारंगर चैनल को तुम माने सब्सक्राइब करिवो एंड तम संग मानक भितरे ए चैनल को शेयर करिवो ठीक अछि इंपोर्टेंट थिंग कोन आज जहाँ भी लेक्चर मु तुमको पढ़ेली जदि लेक्चर नोट्स दरकार बाय पीडीएफ दरकार तुमने वीडियो रे डिस्क्रिप्शन को विजिट करि परिबो डिस्क्रिप्शन रे तुमको गोटे टेलीग्राम चैनल लिंक मिलियो तुमने सेठी जॉइन हे परिबो जोटी के हमें ए वीडियो लेक्चर नोट्स सब सेठी हमें अपलोड करूछु सेंड करूछु तुम सेठी एक्सेस करि परिबो किबा डायरेक्ट भी तुमने एक्सेस करि परिबो ठीक अछि जदि एनी काइंड ऑफ तुमनको हेल्प दरकार तुमरो मैथमेटिक्स रिलेटेड ठीक अछि तो तुमने मो से कनेक्ट हे परिबो ठीक अछि तो आज पई एति की समस्त थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग पुणी देखा नेक्स्ट सेशन ले आमे जोठी आज रहिलो नेक्स्ट सेशन ले सेटू हमें कंटिन्यू करबा ठीक अछि थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।